Bonjour mes amis, good morning my friends. Welcome to my YouTube channel JHS Academy by Dilpreet Kaur. Today we will learn some basic rules of pronunciation of French words. तो आओ फ्रेंच में बोलना सीखें. आज हम कुछ ऐसे प्रोनाउंसिएशन सीखने वाले हैं, ऐसे रूल्स सीखने वाले हैं प्रोनाउंसिएशन के फ्रेंच के, जिसके बाद आपको फ्रेंच में वर्ड्स को प्रोनाउंस करना और इजी लगेगा. So let's start. Our first rule is that H is mostly silent in French, especially when a word is beginning from H. तो अगर कोई भी वर्ड फ्रेंच में H से बिगिन करता है, mostly it is pronounced with the silent sound of H. For example, om, man. Second example is horloge, which means clock. Second rule is the letter J is pronounced differently in French. It is pronounced as je. For example, jardin, which means garden. Second word is je, which means game. Third rule is that in French, T and D have a soft sound, whereas in English, T and D have a hard sound. तो इंग्लिश में टी और डी की साउंड हम ट और ड की देते हैं, बट इन फ्रेंच इट इज़ लाइक त एंड द. फॉर एग्जाम्पल, टोमाट विच मीन्स टोमेटो. सेकेंड एग्जाम्पल इज डिफिसील विच मीन्स डिफिकल्ट. फोर्थ रूल इज लेटर सी इज यूजुअली pronounced as क, but when letters I and E are placed after it is pronounced as s. इस रूल के अकॉर्डिंग वो हमें ये बोल रहे हैं कि सी की साउंड हमेशा क की प्रोनाउंस की जाती है, लेकिन जब सी के बाद दो वॉवल्स आ रहे हैं विच आर आई और ई, जब सी के बाद आई या ई लगता है फ्रेंच में, तो उस सी की साउंड क से चेंज होकर स की बन जाती है. आओ इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज सेट, which means this. Second example is como, which means how. Fifth rule is in French, ch is always pronounced as sh. तो जब भी आप ch से कोई वर्ड देखते हो फ्रेंच में, ज़्यादातर उसको हम श की प्रोनाउंसिएशन देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शेज, चेयर. Second example is chapeau, which is hat. Sixth rule is the consonants coming at the end of a word are mostly not pronounced in French. जब भी कोई वर्ड के लास्ट में कॉन्सोनेंट आता है, आई होप आपको कॉन्सोनेंट्स पता हैं. वॉवल्स के अलावा इंग्लिश में जितने भी लेटर्स होते हैं, ऑल दोज लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. तो जब भी कोई कॉन्सोनेंट लास्ट में आता है किसी भी वर्ड के, उसे मोस्टली फ्रेंच में प्रोनाउंस नहीं किया जाता. सो एग्जाम्पल इज शा, विच मीन्स कैट. पेटी, विच मीन्स स्मॉल. सेवेंथ रूल इज दैट ई इज प्रोनाउंस्ड ओनली व्हेन इट इज प्लेस्ड एट द एंड आफ्टर अ कॉन्सोनेंट. मतलब ई को हम तभी प्रोनाउंस करते हैं जब वो एक कॉन्सोनेंट के बाद प्लेस हुआ हो. आओ इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल, एट्यूडियों, द मस्कुलिन वन इज विदाउट ई एट द एंड. एट्यूडियों, टी इज साइलेंट. And when we are talking about the feminine one which has E at the end, it becomes étudiante. Étudiant masculine, étudiante feminine. Eighth rule is tion is pronounced as sion in French. For example, création, creation. Second is situation. Ninth rule is G and E is pronounced as near in French. For example, España, Spanish, or Spain, España.
España, Spain. Guinea, earn. Guinea, earn. 10th rule is ENT is pronounced as on in French. For example, como, como, which means how. Bâtiment, bâtiment, which means building. 11th rule is SION is pronounced as zion in French. For example, télévision, télévision, which means TV. Second example is révision, révision, which means revision. ये end नहीं है rules का. We have some more kind of rules in French for the pronunciation. तो ये कुछ ऐसे important rules हैं French के जो हमें French properly बोलने में बहुत help करते हैं. ऐसे और rules and perfect French सीखने के लिए like, share and subscribe our channel. Merci beaucoup. Thanks a lot. Au revoir. Goodbye.